Okay, welcome back students. In the last video we are discussing about the effect of temperature on plants. On that video we have covered only the two points, that is metabolism and reproduction that is affected by the temperature. In this video we are discussing all the detail about the effect of temperature on plants. Okay. The next point of the effect of temperature on plant is the growth and development. Growth and development. That means temperature affect the growth and development of plant. How? When temperature is increase or decrease. If temperature is increase or decrease, both the conditions affect the growth of, we can say, the growth and development of plant and development of plant. How? We can say, if the temperature is low, when condition, we say condition first, when the temperature is low temperature, then plant is go into the two condition. First one is the desiccation. And second one is the second is known as a freezing injury. So what is in this both? Desiccation is the completely dryness. That means when the water is not available, in case of when the temperature is too much low, then the you know very well water is absorbed by the roots of plant in the form of with the help of a transpiration pool. When the water is from the ice crystal, or we can say that when water is not available to the plants because of the low temperature, then the plants get completely dehydrated. Okay, we can say that plant is completely dehydrated. ठीक है, that is known as a desiccation. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से प्लांट को पानी नहीं मिल पाता और वो किस में चला जाता है? डेसिकेशन. दैट मीन्स जो प्लांट है वो क्या कर जाता है? सूख जाता है. और ये चीज आप नेचर में भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो क्या, कि जब सर्दियां आती है तो बहुत ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? सूख जाते हैं. मेनली अगर आप अपने घरों में ही बात करते हैं, आप अपने घरों में जो सबके घरों में जो कॉमन प्लांट है कौन सा? तुलसी. अगर आप देखते हो कि जो तुलसी का जो प्लांट होता है, जब भी विंटर्स आती हैं वो क्या कर जाता है? ड्राई हो जाता है. दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ डेसिकेशन. ठीक है, ये बहुत क्या है? नॉर्मल सा फिनोमिना है. उसके बाद मैंने क्या बताया? फ्रीजिंग इंजरी क्या होता है बेटा कि जो प्लांट है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है. प्लांट गेट डैमेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल. कि जब आइस क्या होता है, जब वाटर होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो जाता है. ठीक है, जब वाटर क्या होता है? आइस की फॉर्म में, आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो जाता है, तो वाटर क्या है? अब्सॉर्ब नहीं कर पाते कौन? प्लांट्स, विद द हेल्प ऑफ रूट्स. तो उनके उस वजह से क्या होता है? जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है? डैमेज हो जाता है. और वी कैन से जो प्लांट के अंदर जो पार्ट है, जो प्लांट्स के जो पार्ट है, इनके अंदर जो वाटर फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर बंडल. ठीक है, यू नो वेरी वेल, जो वाटर एंड फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, वो किसकी हेल्प से होता है? वस्कुलर बंडल, और वी कैन से दैट वस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से होता है. दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम. वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रोल प्ले करता है वो कौन होता है? जाइलम. और जो फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, वो कौन होता है? फ्लोएम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो से ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें से वाटर फ्लो करता है, वहां पे क्या हो जाएंगे? आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाएगी और जो वाटर है वो अनअवेलेबल हो जाएगा फर्दर पार्ट्स ऑफ प्लांट के लिए, जिससे क्या हो जाएगी? फ्रीजिंग इंजरी. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड कंडीशन, दैट इज व्हेन द टेम्परेचर गेट इंक्रीज, और वी कैन से दैट हाई टेम्परेचर. फर्स्ट इज लो टेम्परेचर, सेकंड वन इज द हाई टेम्परेचर कंडीशन. देन जब हाई टेम्परेचर की कंडीशन होगी तो प्लांट के अंदर जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं क्या? चिलिंग इंजरी. दैट मीन्स प्लांट गेट डैमेज ड्यू टू हॉट क्लाइमेट. इसमें
इसमें क्या होता है बेटा कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, उसके इंक्रीज होने की वजह से जो प्लांट है वो भी क्या हो जाता है, डैमेज हो सकता है। इसमें आप लोग किसका कंसेप्ट देख सकते हो, विल्टिंग का। इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो किसका देखते हैं, विल्टिंग। विल्टिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मुरझा जाना। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है प्लांट के अंदर, मतलब पानी उसको जब अवेलेबल नहीं होता, जो प्लांट उसके अंदर क्या होता है, विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहले क्या होता है, जो प्लांट होता है इनिशियली वो टेम्परेरी विल्टिंग में जाता है, मतलब वो अगर उसको हम कुछ टाइम बाद पानी दे दें तो वो दोबारा रिस्टोर कर जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट हो, ठीक है, और पानी अगर अवेलेबल ना हो प्लांट को, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, परमानेंट विल्टिंग के अंदर। परमानेंट विल्टिंग, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग में क्या होगा, परमानेंट विल्टिंग में क्या होगा वो डस्टर देना, डस्टर देना, डस्टर, ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग में क्या होगा कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो प्लांट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डैमेज। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। दैट मीन्स when the temperature we all discover the two condition of temperature, that is the low temperature and the high temperature. In case of a low temperature plant, it is going to the two condition, that is the desiccation and freezing point. That means plant go dehydration, or we can say that plant get damaged due to the formation of ice crystal. And in case of a in case of a high temperature plant is going to the chilling injury. That means plant get damaged due to the hot climate, or we can say that the condition is created that is known as a permanent wilting. Now move on a next point, that is temperature based zonation. Move on a fourth point, that is temperature based zonation. Temperature based zonation means that according to temperature, or we can say that the range of temperature, we have divided the zone of earth on the base of temperature, or on the particular zone a particular type of vegetation is present according to the temperature. Okay, we have on the basis of temperature based zonation, we have categorized the zone on the two category, that is latitudinal zonation, and second one is known as a altitude zonation. Altitude zonation. Okay. On the basis of latitude zonation, we have categorized the zone in 6 categories. These are categorized in the 6 category, and in case of altitude, we have categorized the 4 category. Okay. First, considering the category of latitude and altitude, we have clear-cut the meaning of latitude and altitude. Latitude, meaning of latitude is like the breadth, means the breadth. That means breadth. We can say that the कि कितना चौड़ाई के बेस पे जब हम क्या करते हैं, जोनेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूडनल जोनेशन. एंड एल्टीट्यूड जोनेशन इज द, वी कैन से दैट we have measure the height. Okay, is known as the altitude zonation, or we can say that height above the sea level. sea level कि जो sea के लेवल से जो हम हाइट को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड जोनेशन. और जो बेटा हम क्या करते हैं, जो अर्थ है उसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करते हैं, जोनेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल जोनेशन. ठीक है, लैटिट्यूडनल जोनेशन जो हम ब्रेथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अर्थ की ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो जोनेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल. और जो सी सरफेस से हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई जोन या कैटेगरी डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड जोनेशन. ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या, लैटिट्यूडनल जोनेशन एंड द एल्टीट्यूड जोनेशन. Okay, first we are discussing about the latitudinal zonation.
basis of latitudinal zonation, we have formed the sixth category. The sixth category on sixth category. These six category are from north to equator. North to equator. We categorize the category from north zone to equator region like this. If we have draw this the earth, let's suppose this is the earth. Okay, this is the north pole of the earth, geographical north pole, and this is the south pole. Okay, now this we have known that this is the equator region of the earth. From this region we consider that in this side, okay, you know very well this is the polar area or polar area where the temperature is too much low. From this region to this region we have categorized the six region: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, these are the six regions from north to equator. So near the equator, this region, when we highlighted this region is known as a snow region. Okay, this is snow or ice region because here the temperature is too much low. Okay, after the snow region, the next region we are known as tundra region. Okay, and the next one region, that is the third region, tundra region, we have categorized the region as the coniferous forest region. Coniferous forest region. Okay, now the fourth region, this is the fourth. This region is known as a deciduous forest region. Deciduous forest region. Okay, and the fifth region is known as the grassland. We can grassland, or we can say that desert region. And near the equator, this is the region, sixth region is near the equator, and this region is known as a tropical rainforest. Tropical rainforest region. So we have further conclude this all rainforest region. So one by one we have write this. That is the first is snow region. Second one is the tundra. Third is the coniferous region. Fourth one is the deciduous forest region. Fifth one is the grassland or desert region. Grassland, or we can say that desert region. And sixth one is the tropical rainforest region. Tropical rainforest region. Okay, now we are got some examples, one or two examples according to this region. Okay, first in case of a snow region, I wrote this. In the snow region, the type of vegetation that is present is, we can say that snowdrops. Okay, snowdrops are the plants that are present in that area, and one more is Japanese maple. Japanese maple is one more plant, and another one is the berry bushes. Berry bushes, and one more is Virginia. Virginia. This is the type of vegetation that is present in the snow region. Okay, and one more is the tundra region. In this tundra region, the most specific that plants are present are the moss and lichen. Okay, you know very well lichen act as a pointer species in case of a succession. Okay, now move on to the next categories. In is the coniferous. When we have hear about the word coniferous, then in our mind one word is here, that is the pinus plant. Okay, you know the pinus plants are in the shape of cone shape. Okay, in this section one more important question arises that why the plants that are present in the cold region have the cone shape. Okay,
This is the important question. Why the plants that are present in cold climate have cone shape. This is the one more thing that is important. यहाँ पे बेटा क्या है कि जो कॉन शेप क्यों होती है प्लांट्स की जो कोल्ड एरिया में प्रेजेंट है, बिकॉज जो कोल्ड एरिया होता है वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, आइस की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे ही जो आइस है बेटा वो क्या है, गिरती है, तो वो जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं, या मैं बोलूं जो आइस जो है वो क्या है कि जो प्लांट है उसके ऊपर कंप्लीटली सेटल ना हो, डू नॉट सेटल डाउन ऑफ आइस पार्टिकल्स या आइस ड्रॉप्स, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे आइस ड्रॉप ना हो और वो कंप्लीटली क्या करे, यहां से स्लाइड करके क्या हो, डायरेक्ट जो अर्थ का सरफेस उस पर गिर जाए। इस वजह से क्या होता है, जो पाइनर या फिर मैं बोलूं जो कोल्ड क्लाइमेट है उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन शेप के होते हैं। अगर बेटा ये अगर फ्लैट शेप के होंगे तो इन पे क्या होगा, इजिली जो आइस ड्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, और ये क्या करेंगे, जो प्लांट्स की ओपनिंग है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगी। और जब ये प्लांट की ओपनिंग को क्लोज कर देंगी तो उससे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दैट मींस ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स गेट स्टॉप्ड, दैट्स व्हाई दैट किल द प्लांट्स। So that's why the plants that are present in a colder climate have the cone shape. Okay. Now move on a deciduous, or that means in a case of a coniferous region, the plants are present of a pinus, or we can say that oak. Okay. Now in case of a deciduous forest, the plants that are present is एक बार वीडियो पॉज करो। Okay, in this coniferous, the pinus plants are present. Okay, in case of a deciduous forest, the type of vegetation that is present is like the oak and a maple. And in case of a grassland, or we can say in desert area, that in case of a desert area, you know, the temperature is too much high and the availability of water is too low, or we can say that in the desert area scarcity of water is present. Okay, so that's why in that area the type of plant are present in the shape of a needle grass. Needle, that means why they plant or regain the shape of needle, because to avoid the loss of water, बिकॉज जब क्या होगा, अगर इससे क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो जो वाटर है बेटा वो क्या होगा, कम लॉस होगा, किससे, प्लांट से। दैट्स व्हाई द इन केस ऑफ अ डेजर्ट एरिया द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ अ नीडल, और वी कैन से दैट इन केस ऑफ अ डेजर्ट एरिया प्लांट शो सम एडेप्टेशन। एंड one more thing, the plants that are present in the desert area are known as a xerophytic plant. Okay. One more plants that are present in the desert area like the sunflower or indigo. And in case of a tropical rainforest, in this we know that this tropical rainforest area is lie near the equator. That's why in this the vegetation is present of the mixed type. That means in that like the orchid, avocado, banana, bamboo, all this type of vegetation is present. Now we are discuss about the altitude zonation. Okay, altitude zonation. Altitude zonation is that we have discussed that what is the meaning of altitude, that is the height above the sea level. That means we have based the zonation on the basis of height. And in this section we are discussing about the zonation according to altitude zonation according to temperature.
And according to temperature, in case of altitude, we have categorized the 4 category. Okay, the 4 category, one of them is the alpine zone or alpine region. Second is temperate. Third is tropical. And fourth is the subtropical zonation. Okay, in case of alpine, temperate and tropical, in case of alpine, the type of vegetation is present is rhododendron. Example is in this, that type of vegetation in this present is rhododendron. Okay, in case of a temperate region, a type of vegetation that is present in mainly this type of vegetation is matched with the coniferous region that is present in case of a latitudinal region. That's why in this, the temperate region, the plants that are present is like coniferous, or we can say coniferous plant, in which we have concluded the example of pinus, okay, and oak. That type of vegetation is similar to the, we can say that, coniferous forest in case of a latitudinal region. Okay, in case of a tropical and a subtropical, that we are discussing in the latitudinal zonation, that is, in this the mixed vegetation is present. That means in this all type of trees, that like the vegetable tree, or we can say that forest, grassland, all everything are mixed type of vegetation is present in this area. That's so. According to the temperature, we have divided the vegetation, or we divide the vegetation inside according to zones, and in case of according to the breadth of the earth, we have divided the earth in a 6 zonation, and in case of about the sea level or according to height, we have divided the zonation into the 4 category. Now move on to next category, that is next heading, that is the thermal regulation in plants. Next one is the last, that is thermal regulation in plant. So this is the adaptation type of behavior. Like this. When the this type of behavior is seen in animals also, like when the temperature is change, or we can say that when the temperature get low, then the animals start storing the fat inside the body, because fat act like the insulator to pass the heat outside the body. That's why some birds and some like polar bear, etc., they store the fat inside their body. That help in to avoid the release of heat outside the body. As like the animals, plants show also the adaptation type of behavior inside the plant for regulation of the temperature, or we can say the behavior is known as a thermal regulation. Okay, the plant also develop the thick cuticle layer. The adaptation that show plant in response of the thermal regulation is a thick cuticle, or we say that the hairy layer, or we can say that mucilage covering in response to thermal temperature. In response to thermal regulation. That means when the plant develop thick cuticle. Why? Cuticle, cuticle is the outer layer, or we can say that the waxy layer of the plant. Cuticle is the waxy layer. That means when waxy layer is formed on the surface of plant, or we can say that leaf, the outer surface of leaf is covered with the waxy layer, or we can say that a cuticle layer that happen to slow down the rate of transpiration, or to avoid the loss of water outside the body. So when the temperature become high inside the plant, then plant develop a thick cuticle to lose the water. Okay, and hair layering is also to helping to reduce the loss of water outside the body, and a mucilage covering help in the protective secretion that form a layer to help to avoid the exchange of material from body to outside the environment. So this is the thermal regulation in plant.
and this all about the effect of temperature on plant. And if any students have in doubt, then comment me in the comment section. Please like and subscribe my channel. In the next video we have discussed with a new factor, that is the atmospheric humidity. Okay.